Hello everyone and a very good morning to all of you and welcome to BYJU'S exam prep, the most comprehensive preparation app for all exams. जैसा कि आपको पता है कि हर रोज सुबह संडे से थर्सडे तक 11 AM हम लोग द हिंदू एनालिसिस लेके आते हैं. Hello everyone and a very और good morning to all of you. आज 8 सितंबर है. Today is 8 September and we'll be discussing about the Hindu analysis of today by me Salik Ahmed. So yes, good morning guys, good morning. तो आप देख सकते हो दिस इज 8 सितंबर थर्सडे टुडे. आज 8 सितंबर है, थर्सडे है आज. सो लेट्स डिस्कस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ today's The Hindu newspaper. So there was a main article which was, you can say, political article. You can read by your own. It's a you can say Bharat leading Bharat Yatra of Rahul Gandhi. So you can go and read it. It's political, so you can skip it also. ठीक है, तो आप political article छोड़ सकते हो. ये दोनों है, these two things we will be discussing. Okay, yes, good morning everyone, good morning guys. To think tanks face tax survey, this was an article, and this was an article about New Delhi Dhaka hail Ganga panel. ठीक है, so these two things we will be discussing in detail. So सबसे पहले let's start with this. So income tax department action at charity body 2. So you can see it here. Income tax department conducted surveys at 2 think tanks and charity organization in a suspicion of irregularities related to financial transaction. Okay, so it means the income tax department has conducted a survey. So there's a difference between search operation, I mean searching a premises, and surveying a premises. So here the word used is survey. Okay, in Delhi, the department carried out operation at offices of Center for Policy Research in Chanakyapuri, Oxfam, India, Okhla Industrial Estate, etc. and all. So these are no need to remember in detail, but just have a basic idea that they have done a survey on some, you can say, famous think tanks. Okay, so that is what it says. तो इसमें ये बताइए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ जगह, नाम उतना ये याद रखना है, एक मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए, सर्वे किया. तो अब सर्वे और सर्च में फर्क क्या होता है? So another agency official said former was an exhaustive exercise covering all the locations linked to the SCC and would involve seizure of document, cash and valuables. जब वर्ड फॉर्मर लिखा है, इस दोनों कंपेयर किया जा रहा है, इट मींस फॉर्मर मींस इट इज डिस्कसिंग अबाउट दिस. ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन जो होता है वो एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज होता है, ज्यादा सख्त होता है, कवर्स ऑल द you can say all the locations wherever the buildings are, जहां जहां बिल्डिंग सब जगह सर्च होता है. ठीक है, सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, कैश वैल्यूएबल्स यानी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सब सीज कर लिए जाते हैं हर ऑफिस में उस कंपनी की, उस ऑर्गेनाइजेशन की जाके, और कैश और वैल्यूएबल्स को सीज कर लिया जाता है. बट इन केस ऑफ सर्वे, सो हियर इट इज डिफाइनिंग सर्वे. तो फॉर्मर जब लिख रहा है तो सर्च की बात हो रहा है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सर्च. ओके, ये सर्च की बात बता रहे हैं कि अगर सर्च करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो उसका मतलब होता है कि हर ऑफिस में जाकर के जाना, एसेस करना, अगर डॉक्यूमेंट जरूरत पड़े या कैश जरूरत पड़े तो सीज कर लेना. लेकिन सर्वे का मतलब है, हियर इट इज रिटन, सर्वे is limited in its scope given that agency visits the commercial premises usually during office hours, could only impound the transaction records of scrutiny and seek clarification from the person concerned. So survey जो होता है उतना rigid, इतना strict नहीं होता है. It only means that it will go to that premises which is the commercial aspect of that company. ठीक है, or any think tank or any NGO. They go there, they ask during office hour, they ask about transaction, scrutiny, etc. ठीक है, मतलब ये हुआ कि सर्च जो होता है थोड़ा ज्यादा सख्त होता है और सर्वे थोड़ा लीनियंट होता है. उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह सीज वगैरह उतना डिटेल में नहीं किया जाता है, बट एक सवाल वगैरह पूछा जाता है कि ट्रांजैक्शन ठीक है, आप बताइए, उसको क्लैरिफिकेशन दीजिए. ओके, दैट इज द डिफरेंस. एक बेसिक आइडिया होना चाहिए बस. ठीक है, so some questions you have to go and find out in under which department, under which ministry income tax department comes, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, etc. and all. Just go and read it. Who is the minister under this? So they can be asking questions ki under which ministry income tax department comes. Now you should be knowing who is the minister. ठीक है, कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उस मंत्री का नाम क्या है, मतलब उस मंत्रालय के मंत्री का नाम क्या है. Because yes, last year if you see CLAT 2021 they have asked this type of question, है ना. So that is why I am suggesting you go and read it. Then there was an article, this one, New Delhi Dhaka hail Ganga panel. ठीक है, so now let's discuss about it. I hope you are aware that Bangladesh PM
शेख हसीना इज इन इंडिया, है ना, आपको पता होगा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इंडिया में। सो a lot of you can say welcome establishment of joint technical committee to study the use of गंगा waters in बांग्लादेश, ठीक है। सो दोनों ने मिलकर एक ज्वाइंट टेक्निकल कमेटी बनाई है ताकि यूज ऑफ वाटर यानी वाटर शेयरिंग ऑफ गंगा इज डन प्रॉपरली, है ना। तो गंगा की वाटर शेयरिंग से रिलेटेड बातें ठीक से हो। ओके, यस, सम पीपल आर अटेम्प्टिंग होम मिनिस्ट्री, सम आर सेइंग फाइनेंस मिनिस्ट्री। गो एंड फाइंड आउट, अच्छे से जाके फाइंड आउट कीजिए उसको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में। ओके, नाउ it further says कि the leader welcomed the formation of joint technical committee to conduct a study for optimal utilization of water received by Bangladesh under Ganga Water Sharing Treaty 1996. ठीक है, the Ganga Water Sharing Treaty is a 30-year agreement which is expected to be renewed or reviewed by 2026. 1996 में 1996 Ganga Water Sharing Agreement happened for 30 years. Okay, so Ganga flows from India and goes to the Bangladesh. Right? So how the water needs to be shared? कैसे वाटर को शेयर किया जाता है ना, ऐसे गंगा आ रही है यहां से जा रही है, ठीक है। सो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। सो इन 1996 द अग्रीमेंट हैपेंड। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट अग्रीमेंट? गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी। तो 1996 में हुआ था फॉर 30 इयर्स। सो आफ्टर 2026 इट हैज टू बी रिन्यूड, यानी इसको दोबारा ट्रीटी को चाहे तो एक्सटेंड करना होगा या नई ट्रीटी बनाना होगा, है ना। सो आइदर वी हैव टू कम अप विद अ न्यू ट्रीटी और वी हैव टू रिव्यू इट, चेंज समथिंग और renew it, है ना। that is what it says, ठीक है। उसके लिए एक we have made, for that we have made joint technical committee. Joint technical committee means officers or people will be from both the countries in that committee and they will be discussing how to, I can say, further go. यानी joint technical committee का मेन मकसद ये होगा कि दोनों जगह से अधिकारी रहेंगे, वो लोग मिलेंगे, बात करेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, फर्दर कैसे करना है, ठीक है। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। Okay, now the Indian side also raised the urgent irrigation related requirements in Tripura which can be addressed with the rivers of Feni and urged Bangladesh for early signing of the interim water sharing agreement. ठीक है, अब देखो इसमें ये बताया जा रहा है, यहाँ पे एक ना त्रिपुरा, दिस इज त्रिपुरा राइट, यहाँ पे से एक रिवर गुजरती है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट फेनी रिवर, ठीक है। सो basically it is talking the Indian side also raised the urgent irrigation related requirements in Tripura which can be addressed with the water sharing of Feni. तो बात ये हुई कि फेनी रिवर का जो वाटर शेयरिंग है उसकी भी बात जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि जो त्रिपुरा में जो इरिगेशन है, जो सिंचाई होता है, उसमें बेनिफिट हो, राइट। So basically in Tripura irrigation water is required for doing irrigation. I mean irrigation means for against agriculture purpose, water and all. So for that agreement on Feni river is also very important. Yes, it goes from Tripura to Bangladesh, है ना। तो इसी की बात हो रही है, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, no need to go much in detail. Then on first page there was an article you can say which talks about jobs growth key priorities, not inflation. This was the article which says job creation, equitable distribution of wealth in the country along with economic growth are red lettered priorities for the government, while inflation which has been brought to a manageable level over the past 2 months is not a red lettered priority as of now, says Finance Minister Nirmala Sitharaman. Matlab Yuva, she has said that growth and jobs are more important, means GDP growth and creation of employment right now is more important, and according to Finance Minister inflation is on manageable level. Manageable level means we can say टॉलरेबल लेवल, इस तरह कह सकते हो, ठीक है। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि जॉब और ग्रोथ, जॉब्स इन एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी चूंकि बढ़ रही है तो उसको एम्प्लॉयमेंट, उसको काउंटर करने के लिए नौकरियां देना है, और ग्रोथ यानी जीडीपी ग्रोथ एक्सेट्रा एंड ऑल ज्यादा जरूरी है। इन्फ्लेशन जो मैनेजेबल लिमिट में, यानी मैनेज किया सकता है, यानी बहुत भी ज्यादा नहीं है अकॉर्डिंग टू निर्मला सीतारमन के हिसाब से, ठीक है। सो दैट वाज इन द न्यूज, गो एंड रीड इट अबाउट इट इन डिटेल. Then according to her that is what it is. Now there was an article about page number 1 second half में एक आर्टिकल थी, राजपथ सेंट्रल विस्टा लॉन्च रीनेम्ड कर्तव्य पथ. Okay, yes. Now you have to understand one thing, that here it is actually Rajpath and Central Vista in the national capital will now be known as Kartavya Path after National
New Delhi Municipal Corporation in its special council meeting on approved proposal to rename the iconic stretch. राजपथ जो एक्चुअली एरिया है, इट्स अ एरिया अराउंड राष्ट्रपति भवन एंड ऑल, है ना, राष्ट्रपति भवन के आसपास का एरिया जो दैट्स कॉल्ड एज राजपथ. ओके, सो दैट हैज बीन नाउ रीनेम्ड एज कर्तव्य पथ. इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया. पीएम मोदी will inaugurate the revamped Central Vista Avenue which encompasses stretch lawns and adjoining areas. यानी मोदी जी इसको इनॉग्रेट करेंगे इस एरिया को, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को. यस, आप यहां देख सकते हो. लेट मी शो यू हियर. यस, सो दिस इज इंडिया गेट. इफ यू सी इट केयरफुली, है ना, आपने देखा होगा ये सब, है ना. सो हियर इफ यू गो, इधर जाकर के आपको राष्ट्रपति भवन मिलेगा. दीज आर द रोड्स अराउंड इट, है ना. इस पूरे एरिया के जो रोड्स है ना, दैट्स कॉल्ड एज राजपथ एरिया. अर्लियर इट वाज कॉल्ड एज राजपथ एंड नाउ इट इज कॉल्ड एज कर्तव्य पथ. यू कैन सी इट हियर आल्सो. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, मींस डिफरेंट मिनिस्ट्रीज आर देयर. दीज आर द मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, प्रेसिडेंट हाउस. यहाँ पे आओगे, देखो, लेट मी शो यू हियर. हाँ, दिस इज इंडिया गेट. दिस इज अ करेक्ट, मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट फोटो आप देख सकते हो, है ना. यहाँ पे इंडिया गेट है. Then you can see here is the government departments, North Block, South Block, President House, Rashtrapati Bhavan, the different buildings and all are there. तो ये पूरा जो रोड है ना, ये सब रीजन, ठीक है. These all are called as actually Rajpath. Earlier it was called as Rajpath area, and now this will be called as Kartavya Path. ठीक है, हाँ, ठीक है. So this aerial view taken by ANI, तो इसीलिए मैंने उनका फोटो लगा दिया, उनका नाम, है ना. So that is what it says. ठीक है. यस, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए. मेनी पीपल हैव विजिटेड दिस एरिया एंड ऑल, है ना. अगर आप दिल्ली में रहते होगे तो आप इस एरिया में जरूर घूमा होगा, इधर से गया होगा. गाइस, एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन. वी आर सीइंग ओनली 24 लाइक्स, 52 इज वाचिंग. सबको एक बार लाइक बटन प्रेस कर दो एवरीवन, ठीक है ना. नाउ देयर आर टू आर्टिकल्स हियर. The first is how ideology muddled inflation control in India, the spirit of 1971. So let's discuss about this. Here, Mr. Pulapuri Balakrishnan is talking about how ideology muddled inflation control in India. So basically, he is talking about inflation-related things. Like governor of RBI recently said that it will take around 24 months to bring it to the target level of 4% of inflation. 24 महीने यानी 2 साल के आसपास और लगेगा 4% तक इन्फ्लेशन लाने में. So right now we have crossed 6.8%, right? Upper limit is 6%. 6% upper limit है, इससे ज्यादा चला गया है ना. We were discussing about it that it has crossed it and now it is 6.8%. So the RBI governor has said that in the next 2 years it would be brought to the somewhere around 4%. क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा चली गई है, मतलब 6.8 चली गई, इसलिए लोग बोल रहे हैं कि इसको कम करना होगा 4% तक आने के लिए. If the prognosis is correct, by 2024 it would have remained off target for close to 5 years. जैसा कि ये बता रहे हैं कि अगर ये बात सही निकली कि 2 साल के अंदर ये 4% पे ला देंगे, तो वो जो लिमिट है 4 ± 2% का, वो 2005 साल तक उस लिमिट को क्रॉस किया रहेगा, जैसा कि ऑथर कहने का मतलब है. ठीक है, दैट इज व्हाट ही सेज. बट एक जनरल आइडिया रखो कि यस, इट हैज टू बी 4 ± 2%, दैट इज फ्रॉम 2 to 6%. बट राइट नाउ इट हैज क्रॉस द लिमिट एंड इट विल टेक टाइम टू कम बैक, है ना. तो इसमें कुछ वक्त लगेगा रेंज में आने से पहले. ठीक है, दैट इज व्हाट द ऑथर सेज. देन हियर द ऑथर इज डिस्कसिंग अबाउट 1930s ग्रेट डिप्रेशन. ठीक है, सो ही इज टॉकिंग अबाउट ग्रेट डिप्रेशन इन व्हिच ही सेज दैट सोवियत यूनियन वाज अनअफेक्टेड. जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तो यूएसएसआर में असर नहीं हुआ था, बाकी वेस्टर्न नेशंस, यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज गॉट अफेक्टेड. So that is what he is saying. The author is saying that the USA, Western nations got affected, but USSR was not affected. The Great Depression was much a crisis for the economic profession. The central banks were rendered helpless for monetary policy, you can say, etc. and all. That is why the author is talking about Keynesian economics. ठीक है, which talks about socialization of investment. अब देखो, here basically the author is saying कि the US and other Western economies could not perform well during 1930s Great Depression. जब Great Depression आया था तो USSR तो ठीक से काम कर रहा था, बाकी लोग में दिक्कत हो गया था. और जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, सेंट्रल बैंक tried itself to manipulate the, you can say, interest rates and all, but still it was not successful. And that is why he talks about Keynesian economics. ठीक है, so according to author, Keynesian economics, according to which what is correct. ठीक है,
तो ऑथर ये पूछ रहे हैं कि अगर केनेसियन इकोनॉमिक्स जो होता है, जो कि एक सोल्यूशन माना गया है ग्रेट डिप्रेशन को, इसमें क्या होता है? सो व्हेनेवर अ रिसेशन हैपेंस, what is the suggestion of Keynesian economics? Or it is from Keynes. Keynes was a very famous economist actually. तो उन्हीं का ये थ्योरी दिया हुआ है. तो which of the following you will find to be the most appropriate? Guys, everyone please press the like button. सबको like button press कर दो. We are seeing 36 likes, 55 is watching. सबको like button press कर दो फटाफट. What is the right answer? Yes, Muskan Goel, Hariom Avadh, Shreya, Lakshmi. Good, right? Debadrita, Nancy, you all are right. So basically during crisis public investment is most important. देखो इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन क्लैट 2020 में they have asked questions on economics. ठीक है, during crisis public investment is the most important. That is what the author is talking about. He says socialization of investment, है ना? Socialism and all, the idea is to pro poor and all, right? That is what the idea is. At some level, the message went when private investment was depressed, public investment must take over. That is what he is talking about. When private investment is low, it is the job of the government to invest. ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए कभी भी इकोनॉमी गड़बड़ाती है तो प्राइवेट लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए कि वो फियर करते हैं, है ना, कि कहीं मेरा पैसा डूब नहीं जाए. उस केस में गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट जरूरी है. पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब गवर्नमेंट शुड स्टार्ट डूइंग एक्सपेंडिचर, राइट? दैट इज व्हाट द केनेसियन इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट. यस, देखो ना, argue that economic fluctuation can be mitigated by economic policy response coordinated between government and central bank. लिखा है ना, नहीं गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा. दैट इज व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, है ना. Keynesian economics generally advocates regulated market economy, predominantly private sector, but with an active role of government intervention during recession or depression. जब रिसेशन या डिप्रेशन आए तो गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट करना होगा, गवर्नमेंट का रोल बढ़ जाता है, राइट? दैट इज व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट. ठीक है, ये कई बार इनफैक्ट इंडिया के केस में भी ये ट्रू माना जाता है केनेसियन इकोनॉमिक्स. और क्या होता है कि देयर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम कैन से द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, दे डू नॉट लाइक इट केनेसियन इकोनॉमिक्स. ठीक है ना, देखो ये क्वेश्चन आया था इसी टाइप का, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन क्लैट 2020 आफ्टर द चेंज ऑफ सिलेबस. 2020 में ये सवाल आ चुका है. Which of the following economic policies, देख रहे हो इकोनॉमिक पॉलिसी सवाल पूछ रहे हैं, have been recently used by RBI to boost economic forex economy during current pandemic situation. So this was recently, इसलिए कि just before the CLAT 2020, 1 or 2 months back it was in the news. तो CLAT 2020 से 2-3 महीना पहले ये न्यूज में था. ठीक है, तो उन्होंने पूछा. अभी हो सकता है केनेसियन इकोनॉमिक्स वगैरह कुछ न्यूज में आ रहा है तो पूछ सकते हैं. Yes, डी साक्षी, देवादिता, शुभम, अस्मिता, श्रेया, अनुष्का, you all are right. All of the above is the right answer. Yes, ये तो आपको पता होगा because it's a previous year question, है ना? You should be knowing it. Yes. Everyone, please press the like button. We are seeing only 39 likes. So आप कोई फटाफट like button press कर दो. Yes. Then he further says stagflation, a combination of inflation so further he's talking about stagflation. ठीक है. तो पहले आप ऐसा करो, इसका आंसर पहले बताओ. There's one more question. This is also dealing with the terms of economics. Stagflation means what? High recession, stagnant inflation, high inflation coupled with not very impressive or stagnant GDP growth, none of the above. Stagflation का क्या मतलब होता है आपको बताना है. ठीक है, what is the right answer, guys? Waiting for your answers because the author has discussed in this article. Stagflation word का जिक्र किया उन्होंने, डिस्कशन किया. Yes, Shreya, Ayush, Muskan, Asmita, Nancy, Anushka, Aditi, Ahana, Shubham, Pandey, Preeti, Hariom, you all are right. Yes, some people said B, वो लोग ऐसे लोग stagnant और inflation, तो ये होगा नहीं. It's not stagnant inflation. Inflation तो और तेज भागता है. High inflation coupled with not very impressive or stagnant GDP growth. This is the definition of stagflation. ठीक है, यहीं पे तो ऑथर बात कर रहे हैं ना. A combination of inflation with stagnant output, है ना? That is what the author is talking about. ठीक है, so एक basic idea उन्होंने लिया है, बताया है ना. Go and read more about this article, है ना. देखो these types of terminologies, देखो जैसे stagflation है, this is a terminology coming in news again and again. Yes, because a lot of countries are suffering with stagflation. बहुत सारे country कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद stagflation से सफर कर रही है, right? And that is why stagflation word is coming in the news again and again. Like similar when CLAT 2020 exam happened, just 1 or 2 months before, LTRO was very much in the news. Long term repo operation बार बार अखबार में आ रहा था, तो जो बच्चा अखबार पढ़ रहा होगा आंसर कर दिया होगा. ठीक है,
तो यही आपको समझना है कि द टर्म्स विच आर कमिंग बिफोर द एग्जामिनेशन इन द न्यूज पेपर्स आर इंपॉर्टेंट. यस, इसका आंसर क्या होगा बताओ? कैन एनीवन टेल मी? LTR, what is the full form? What is the answer to this question? Yes, the right answer is D, all of the above, है ना. So पढ़िएगा जा करके what does long term repo operation means and all. ठीक है. Yes, Piyush, Harshita, Hariom, you all are right. Now let's talk about this. Good. बहुत से लोगों ने D आंसर किया. Yeah, right. देखो previous year question आपको देखा हुआ होना चाहिए. Why it is important? With the help of previous year question, you will get an idea of how the upcoming examination will be. कैसे और आगे क्वेश्चन एग्जाम आएगा वो जानना जरूरी है. Spirit of 1971, India and Bangladesh must focus on future cooperation based on past partnership. ठीक है. So the author is talking about the same, the India-Bangladesh relation as Prime Minister Sheikh Hasina is in India. ठीक है. तो शेख हसीना जो प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, वो इंडिया में आई हुई, बहुत सारा एग्रीमेंट साइन हुआ है ना, 7 एग्रीमेंट्स एक्सेट्रा. The conclusion of forced water sharing agreement in 26 years, the launch of free trade agreement. देखो 1996 में गंगा वाटर एग्रीमेंट हुआ, plus 26 years you will add, so it will be 2022. After 26 years we are having an agreement on water. So we are talking about Kushiara River agreement, है ना. So joint river commission has been set up. एक Kushiara River agreement के लिए joint commission, river commission has been set up to talk about Kushiara River, right? Second thing, the author is talking that we are having 54 transboundary rivers. ठीक है, मतलब 54 रिवर इधर से इधर क्रॉस करती है. You understand? So from India to Bangladesh, 54 rivers crosses. And here the author is talking about that we are doing a deal on Kushiara River, right? Kushiara River में deal agreement कर रहे हैं ना. So let's see where exactly it is first. Yes, this is Bangladesh, है ना. और यहां पर है, दिस वन इज एक्चुअली कुशियारा रिवर, है ना. सो लेट्स सी हियर इन द मैप में देखते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना. सो दिस इज इंडिया, दिस हियर यू विल फाइंड इट, हियर इज बांग्लादेश, यहां पे मिलेगा. चलो चलते हैं. यस, दिस इज द बॉर्डर, राइट. ये बॉर्डर है ना. एंड दिस इज हियर यू विल फाइंड दिस, राइट, समवेयर हियर, है ना. सो यू कैन सी this is Bangladesh border, है ना, and here it is this Kushiara river. Okay, is it clear? Yes. Okay. Yes. Let's move on. एक दो और dispute है that we needs to be solving. We should be solving. Here it is Teesta river. आपने पता होगा, आपको पता होगा, है ना. The dispute is still going on. We have not completely solved it. अभी तक completely solve नहीं किया है. One more thing is that प्लीज डाउनलोड द बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप. जो लोगों ने भी डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड द बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप. गो टू क्लैट एंड लॉ सेक्शन, डाउनलोड कीजिए बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप. क्लैट एंड लॉ सेक्शन पे जाइए एंड यू विल गेट दिस स्क्रीन. टुडे एट 8 PM वी विल बी हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. आज 8 बजे यू कैन सी दिस विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन टुडे. No, not 8 PM, sorry, please correct it. It's 6 PM. Today at 6 PM we'll be having a very important session on this. Please go and watch it. We'll be discussing, we'll be asking quiz also, quiz based polls. ठीक है. So please join it at 6 PM. Important summits and conference to focus on. 6 बजे आज एक सेशन होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा on app. ठीक है. Second thing is and that will be a quiz. ठीक है. Important summits like G7, G20 जो recent हुआ है, BRICS. ठीक है. So I'll be asking questions on these topics which are very very important for your exam. The next, इस पर क्लिक करोगे, you will get a lot of these contents. We have made these contents with very much hard work, the entire team. So please go and watch it. ये वाला जाकर के जरूर देखना. A lot of content, some of them are available for free also. If you join our paid courses, then of course you will get all the contents for free, है ना. For yes. Now let's talk about these two articles, uncertain future and then hits and misses in tangent co's tariff petition. देखो, अब देखो एक चीज समझो. This is not, you can go and read it because it is specifically talking about Tamil Nadu's general distribution corporation. It is a state specific, so you can skip it. ठीक है. ये बहुत state specific discussion है, तो आप उसको skip भी कर सकते हो unless until बहुत ज्यादा अगर न्यूज में आ गया तब डिस्कस किया सकता है. Here you can talk about uncertain future, है ना. So I hope you are aware that Chile was going through referendum. Okay.
referendum. Here it is Chile. Let me show. Here is India. This is South America. Okay, and here it is Chile, है ना. तो चिली रेफरेंडम के लिए कर गया था फॉर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. Referendum means voting by the general public to come up with something new. So here it was talking about a new constitution. Why? Because the old constitution was made by General Augusto Pinochet almost 41 to 42 years back. Okay, General Augusto Pinochet, it had a lot of flaws. बहुत सारी इसमें कमियां थी, स्पेशली चूंकि मिलिट्री डिक्टेटर के द्वारा बनाया गया था, तो ऑफ कोर्स उतना इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा. Now, what happened was the new president, the Gabriel Boric, is a very young 36-year-old, had come up with the idea of a new constitution. But people, 62% of the people said no. यानी 62% लोगों ने ना मना कर दिया नया कॉन्स्टिट्यूशन से. क्यों मना किया? So Chile witnessed street protests in 2019, etc. and all when President Sebastián Pinera was there to promise the new constitution. तो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन किसी को पसंद नहीं था, पिनोशे एरा वाला, right? So that is why people had demanded the new constitution. So earlier constitution was pro-business, pro-market, restriction, state intervention, etc. तो बहुत सारी चीजें थी जो जनता को पसंद नहीं थी, इसीलिए वो नया संविधान चाहते थे. Since people were not liking it, they wanted a new constitution. But when Mr. Boric came up with the new constitution, people also voted, you can say, against it. Why? One of the reason it is saying is because they are giving too much rights to indigenous people and this is not liked by them. ठीक है. So promise legalize abortion. पहले legalize abortion को legalize करने की बात की, जो कि generally supportive होता है. Universal health care, mandate gender parity, empower labor unions, tighten regulation on mining. So he talked about, actually the new constitution talked about gender parity, means gender equality, है ना. Labor unions, strengthening labor unions, universal health care, legalizing abortion. So these are generally considered as positive steps. Generally लोग उसको positive steps समझते हैं. But something not liked is indigenous population. So recognizing 11 indigenous population. ठीक है. So this proposal became the rallying cry of rejection, which argued that the enhanced rights of indigenous communities and limits the new constitution with place of security agency would promote anarchy, etc. and all. So लोगों ने इसलिए अपोज किया कि जो इंडिजिनस कम्युनिटी है, देखो इंडिजिनस कम्युनिटी मतलब ये हो कि देखो, now the white people, earlier there were people from can say these people like Mapuche and local communities, है ना, जो ethnic tribes पहले थे. बाद में आकर के Spanish and Portuguese came and captured these regions of South America. तो now जो ये ज्यादा white race वाले people यहाँ पे रूल कर रहे हैं ना, है ना, जो यूरोपियंस एंड ऑल मेजर कम्युनिटी हैव बिकन. बट ओरिजिनली जो थे इंडिजिनस पहले से जो रहते थे, दे वेर नॉट गिवन द राइट्स. नाउ इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन दे आर गिवन अ लॉट ऑफ राइट्स एंड दैट इज नॉट लाइक बाय द पीपल, है ना. 13% लिखा हुआ ना. सो दिस इज नॉट लाइक बाय द पीपल एंड दैट इज व्हाई दे वोटेड अगेंस्ट इट. ठीक है, ये पसंद नहीं आया लोगों को, इसलिए वोट किया अगेंस्ट. इज इट क्लियर गाइस? होपफुली everyone please press the like button, share this video, subscribe to our channel. देखो यहाँ पे he is talking about, the author is talking about CSR. So ये तो आप अपने से पढ़ लेना. Corporate social responsibility. It means, what do you mean by corporate social responsibility? Means that you can say sort of a charity given by you can say corporates, the big corporates, or helping in you can say eliminating poverty and all, है ना. That is what the idea is. Plurinationally समझे, plurinational plural, है ना, means multiple people of multiple ethnicity living here, है ना. It's sort to define Chile as plurinational, means Chile is a country which adjusts and celebrates diversity. इस तरह आप समझ सकते हो, है ना. Yes, that is what is being discussed here. So the author is talking about the CSR initiatives of NGO. You can read it. It's not that much important. ठीक है. Guys, everyone, please press the like button, comment, share this video, and subscribe to our channel. There's a subscribe button there. नीचे में subscribe button, उसको फटाफट press कर दो. Yes. Time for a joint space exercise. अब देखो, India and US will undertake a joint military exercise in Oli in Uttarakhand. अक्टूबर में भारत और अमेरिका जो है ओली उत्तराखंड में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा विद एन एल्टीट्यूड ऑफ 10,000 फीट. ठीक है. एंड सम 95 किलोमीटर फ्रॉम LAC. सो LAC से 95 किलोमीटर दूर. इसका मतलब है कि चाइना से बहुत करीब होगा. इट मींस इट इज
You can see, let me show in the map. So here it will be doing, है ना, somewhere here in Uttarakhand. This is Uttarakhand, and somewhere here Oli is there, where India and USA will be doing exercise. So it will be very near to China, right? So perhaps because here is the border and here is China, ठीक है? It might be giving a signal, है ना? हो सकता है एक signal हो दिया जा रहा हो. That is what the author is talking about. Then third, it will have, so it is saying the time is right for inaugural India-US joint space military exercise. So according to author, India and US should go for space military exercise also. Any space military exercise करिए, author का कहना है. First, this single act will push India's defense partner into a new orbit. Second, it will send a strong message to common adversary. It will have other ripple effects for a wider quad. तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर दोनों मिलकर के अगर स्पेस में ज्वाइंट स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे तो इंडिया के डिफेंस पार्टनरशिप में एक नया रोल मिलेगा. दूसरा ये है कि कॉमन एडवर्सरी यानी चाइना पर कहा जा रहा है कि एक मैसेज देगा इंडिया और यूएस मिलकर के चाइना को. कॉमन एडवर्सरी का यहाँ पे यही मतलब हुआ बेसिकली. और क्वाड में भी रिपल इफेक्ट्स देगा. दैट इज व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट. हाँ, yes, Oli is an altitude 10,000. Then space has been singled out as a critical area, etc. and all, है ना. So in the recent defense technology and trade initiative meeting between India and US for the first time in history, ठीक है. तो स्पेस को फाइंड आउट किया गया कि क्रिटिकल एरिया है कॉपरेशन का जिसमें इंडिया और यूएस पार्टिसिपेट कर सकता है. कहाँ ये डिस्कस किया गया? डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव के मीटिंग में, ठीक है. Then actually he is giving a lot of examples. जैसे एक मिशन शक्ति हुआ था 2019 में, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा. ASAT, anti satellite missile, means you can say a satellite can be destroyed by a missile etc. in space, ठीक है. तो उसको कहते हैं मिशन शक्ति. Okay, so that was conducted. So author is giving the example of that also, है ना. कॉमन एडवर्सरी मतलब होता है एक तरह का एनिमी, आप समझ लो. तो इंडिया और यूएस का कॉमन एडवर्सरी यानी ए कॉमन एनिमी इस कॉन्टेक्स्ट में कौन होगा? हालांकि ऑथर ने नहीं लिखा है, बट समझने वाले के लिए है कि ये चाइना की बात हो रही है, ठीक है. सो द ऑथर हैज नॉट रिटन अबाउट कॉमन एडवर्सरी, बट हियर द सिग्नल द ऑथर इज गिविंग इज टॉकिंग अबाउट चाइना, ठीक है ना. जो दोनों के लिए कॉमन एडवर्सरी मतलब जिससे मतलब एनिमोसिटी कह सकते हो, है ना. हाँ, या जिससे बहुत अच्छा रिलेशन ना हो. Now there was an article on op-ed page talking about cyber criminals and all. ठीक है. So cyber crimes has increasingly targeted bank customers from non-metropolitan areas. Fraud, red credit card, OTP, online banking, ATMs, etc. are a steady rise. ठीक है. मतलब ये ऑथर बात कर रहे हैं कि ये सब चीजें बहुत बढ़ रही हैं. खास के लॉकडाउन के टाइम पे भी बहुत बढ़ गया था कि एटीएम से, क्रेडिट कार्ड से, ओटीपी से फ्रॉड हैज इंक्रीज्ड, ठीक है. कोई फोन करके आपको कह रहा है कि हम फला बैंक से बोल रहे हैं, आपके बैंक से, आप अपना ओटीपी पिन बता दीजिए. कभी नहीं बताइएगा. प्लीज डू नॉट डू दिस. नेवर अ बैंक एम्प्लॉय विल कॉल यू एंड से कि प्लीज शेयर द ओटीपी और पिन और सीवीवी एक्सेट्रा ऑफ योर एटीएम कार्ड. कभी मत बताइएगा. कभी बैंक वाले ऐसा फोन नहीं करते हैं. और अगर ऐसा करते हैं तो भी नहीं बताइएगा. आप जा करके बात कीजिएगा उनसे. गो विजिट द बैंक एंड देन टॉक. डो नॉट टॉक ऑन फोन. कोई और बंदा फोन कर रहा होगा, आप फंस जाओगे. सो दीज आर थिंग्स आर विच आर ऑन द राइज. देखो ये बात ही कर रहे हैं कि नॉन मेट्रोपॉलिटन एरियाज में इट इज मोर, ठीक है. जो बड़े शहर में लोग ज्यादा सतर्क होते हैं ना. सो पीपल आर मोर अवेयर, हैव नॉलेज, आर मोर लिटरेट. सो पीपल फ्रॉम लेसर एरिया, आई मीन कैन से स्मॉलर एरिया लाइक नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज माइट नॉट बी दैट मच अवेयर और एजुकेटेड. कोई फोन किया, एटीएम पासवर्ड पिन पूछा, उसने बता दिया. सीवीवी नंबर पूछा, आपको इतना का लॉटरी निकल गया है. So they came up with such an idea. They'll call you and say कि आपको इतना का लॉटरी निकल गया, आपको ये करना होगा, वो करना होगा. These all are fake things. Be aware of this, है ना. Then truth but no evidence. The author is talking कि cyber fraud cases में क्या होता है? Cases true but insufficient evidence or traced or no clue. मतलब पुलिस भी ये मानती है कि हाँ ये क्राइम हुआ है, इसमें आपका पैसा निकाला गया है, लेकिन चूंकि मेरे पास एविडेंस ही नहीं है पकड़ने के लिए, इसीलिए हम इसको पकड़ नहीं सकते हैं. And that is one of the very reason why it is talking about poor conviction rate. ठीक है. सो कन्विक्शन उतना अच्छा नहीं है. यानी कोई पुलिस पकड़ के सजा कोर्ट तक फाइनल डिसीजन हो गया जिसमें मालूम हुआ कि ये बंदा साबित हुआ, वो बहुत कम होता है. सो द फाइनल कन्विक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इज वेरी लेस. दैट इज व्हाट द ऑथर इज डिस्कसिंग इट, है ना.
तो एक मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए, इतना परसेंटेज वगैरह नहीं याद रखना है, नो नीड टू रिमेंबर दिस परसेंटेज एंड ऑल, बट जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट द साइबर इश्यूज एंड ऑल, व्हाट आर द इश्यूज अराउंड साइबर क्राइम्स, है ना. Then let's talk about page number 10. Cabinet approves PM Shri scheme. But before that, there is a question for you. Question number 3. Who is the Minister of Education? Mr. Dharmendra Pradhan, Mr. Anurag Thakur, Mr. Hardeep Singh Puri, Mr. Devendra Fadnavis. Education Minister कौन है? Last year CLAT में similar question was asked. So it was asked about Health Minister. So this time they can be asking other ministry also. Who is Minister of Education? Yes, good, good. It's Dharmendra Pradhan, Mr. Dharmendra Pradhan. Yes, Preeti, Sakshi, Devadita, Nancy, Shubham, Rudri, Hariom, Piyush, Shreya, you all are right. So you can say Dharmendra Pradhan, Minister of Education. So last year actually this question was asked. Minister of Health and Family Welfare is whom? कौन है ये बताओ तो? Who is Minister of Health? कुछ ही दिन पहले मैंने डिस्कस किया था. Anyone? This was asked last year in exam. Yes, the right answer is Shri Mansukh Mandavia. Yes, Preeti Gupta, right, good. So, yes, is right. Debadrita, Lakshmi, Hariom, you all are right. So this is what the article says. Union Cabinet on Wednesday approved PM School for Rising India. Please remember PM Shri full form. Okay. You can say into model schools for implementation of National Education Policy 2022. थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया author ने, 2020 होना चाहिए. National Education Policy 2020. ठीक है. To implement this National Education Policy 2020, PM Shri योजना has come up. ठीक है. इसमें क्या होगा कि this much amount of money has been disbursed. Amount नहीं याद रखना है कि कितना करोड़ का है. No need to remember that amount. Then it further says that the scheme has been announced at a time. देखो हाँ, schools will be selected only if state government agrees to implement it. If the state government agrees to implement National Education Policy 2020, then only schools, that school will be selected. उस राज्य में स्कूल तभी सेलेक्ट किया जाएगा पीएम श्री योजना के तहत, इसलिए जब राज्य सरकार मानेगी. ठीक है. In fact, Tamil Nadu and some states have opposed it. National Education Policy को तमिलनाडु ने अपोज किया है. And the entire country when education is a state subject, again गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, it's a concurrent list. The author has committed a mistake here also. ठीक है. Education is now in concurrent list. पहले state list में हुआ करता था. After 42nd amendment, it is in concurrent list. So there's a mistake here. PM Shri का full form है PM School for Rising India. ठीक है. That is the full form of PM Shri. ठीक है. In fact, there was an article in the Hindu itself कि education should be made a state subject, but it is not a state subject. It's a concurrent list. It is in concurrent subject. यहाँ पे गलती हो गई है. It's a mistake by the author. ठीक है. Please correct it. हाँ. So you can see it here. PM Shri School, PM School for Rising India. Here is the full form. I am showing from the PIB's website. है ना. Teachers Day में ये announce किया गया. What are the benefits of this PM Shri योजना और PM Shri School? Acts as an exemplar school, यानी सबसे high class school माना जाएगा. इसमें क्या रहेगा? It will be experimental, holistic, integrated, play toy based school, inquiry driven, discovery oriented, learn centered, discussion, flexible, enjoyable, etc. Then schools will be equipped with modern infrastructure like labs, smart classroom, libraries, sports equipment, art room. It's inclusive and accessible. इन्हें ऐसा स्कूल बनाया जाएगा जो कि लैब्स हो, जहाँ स्मार्ट क्लासरूम हो. स्मार्ट क्लासरूम मतलब क्या, डिजिटलाइज हो, है ना. बहुत सारी चीज यू कैन से इट विल बी टॉट विद द हेल्प ऑफ दैट, इसको क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर एंड ऑल. लाइब्रेरीज हो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो, आर्ट रूम हो. इंक्लूसिव और एक्सेसिबल हो. इसका क्या मतलब हुआ? इंक्लूसिव का मतलब होता है सबका साथ सबका विकास. सो दैट सबका इज इंक्लूसिव. Means it should cover everyone. Accessible, especially it is talking about physically disabled. है ना. Accessible word generally उनके लिए यूज किया जाता है. There is a Accessible India campaign for that, है ना. इसका ये मतलब होता है, फिजिकली डिसेबल्ड का ये मतलब होता है, मतलब जो लोग विकलांग हैं उनके लिए नहीं, स्कूल ऐसा बनाओ ताकि विकलांग लोग भी अगर फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे चढ़ना हो तो उनके लिए स्लोप हो. ठीक है. एटसेट्रा एंड ऑल. तो हर गरीब तबका, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विकलांग, सब के लिए ये स्कूल अवेलेबल होना चाहिए. इस तरह बनाया जाए, है ना. दैट इज व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट. ओके. नाउ देयर इज एन आर्टिकल, पेज नंबर 12. आर्मी अंडरटेक्स मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइव अलोंग LAC इन अरुणाचल प्रदेश. ठीक है. ये वाला में ये है कि देखो, जनरली वी कॉल LAC द कैन से लद्दाख रीजन. ठीक है.
बट हेयर द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट दिस, ये अरुणाचल प्रदेश है ना, यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तवांग की बात कर रहे हैं ना. तवांग इज अ डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश हेयर. ठीक है, दिस इज अरुणाचल प्रदेश. is on a major drive for capability and infrastructure development in the. So basically significant upgrading firepower and infrastructure. यहाँ पे infrastructure मतलब होता है roads वगैरह बनना, borders में क्या होगा infrastructure and all. Then upgrading of arms, firepower means guns etc and all. उसको upgrade किया जा रहा है in this region, है ना. So it is talking about तवांग sector. So here this is, यहाँ पे जो टिप पर है ना अरुणाचल के, that's called तवांग. So then there was one more article. Xi Putin said to hold talks in Uzbekistan. Okay, this was an article. तो देखो अभी क्या है, Shanghai Cooperation Organization meeting is going to happen in Uzbekistan and here is Samarkand. Samarkand में we will be having Shanghai Cooperation Organizations, you can say summit, where different nations of SCO will participate. So China and Russia are members also. So Xi Jinping from China and Vladimir Putin will also hold talk. तो इसमें लिखा हुआ है कि समरकंद में जब अगले महीने अक्टूबर में जब मीटिंग होगी तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन दोनों टॉक्स करेंगे. दैट इज व्हाट द ऑथर सेज. ओके, नाउ यू कैन सी इट हियर. दिस इज a 100 days strategy to crack CLAT 2023. You can watch our session. Please subscribe to our channel. Whenever this video will come, you will get the notification. And these are our successful CLAT students. So this is all about today's class. Thank you everyone. Download the BYJU'S exam prep app at 6 p.m. I will be meeting you with the very important summits related quiz. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day. Please do join at 6 p.m. our app session. Okay. Thank you everyone. Thanks for watching.